Good morning everyone. Today we are going to continue our exercise 6.5. Like yesterday we have discussed first, second and third questions of exercise 6.5 which were related to Pythagoras theorem of right angle triangle. Okay, or I can say that Pythagoras theorem is applicable only on right angle triangle. What does the theorem says? That in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. Okay, so by using that theorem again we will do other questions of exercise. Let's start from question number 4. In that the first part is, the question is which of the following can be sides of a right angle triangle. आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं और तीनों पार्ट में 3 साइड्स दी हुई हैं and the question is that which one will be the sides of a right angle triangle. तो ये तीनों राइट एंगल की साइड्स तब कही जाएंगी when these three will follow Pythagoras theorem. And what does the Pythagoras says? That square of hypotenuse is equal to base square plus perpendicular square. Okay, I am writing Pythagoras theorem as PT, but you should write complete. Okay, by Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Now in this, how I will know that which one is base, which one is perpendicular and which one is hypotenuse. So one thing we know that hypotenuse is the longest side. Okay, so which one is the longest side? 6.5. So according to that 6.5 square should be equal to 2.5 square plus 6 square. Okay, सो लेट्स चेक. अब देखिए 6.5 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी. लाइक इन आई विल टेल यू वन पैटर्न. कभी भी जिसके लास्ट में 5 है उसके स्क्वायर निकालने का तरीका होता है. अगर 5 है तो क्या बन जाएगा, ये 25 और 6 है. यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, 6. सो 6 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7. सो 6 7 जा 42. ओके, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, लेकिन जब स्क्वायरिंग हो रही है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए. सो दिस इज द स्क्वायर फॉर 6.5. इसका भी इसी तरीके से निकालेंगे. 5 है तो लास्ट में क्या बन जाएगा, 25 एंड 2 इज हियर, द नेक्स्ट नंबर इज 3. सो 2 3 जा 6. पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएंगी. और 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36. इट्स वेरी सिंपल. ओके, so this will be same 42.25, but this we can add. When I will add these two, what I will get? I will get 42.25. So what we have seen, that left side and right side is coming equal. Therefore these are the sides of a right angle triangle. ओके, नाउ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. कैसे हम चेक करते हैं, सिंपल सा तरीका है. जैसे जो भी आपकी 3 साइड्स दी हुई है, जैसे इसमें अगर आप देखो 2 2 एंड 5, दीज 3 साइड्स आर गिवन, दे ऑल आर इन सेंटीमीटर. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. इसमें से हाइपोटेन्यूज किसको लेंगे, लॉन्गेस्ट साइड को, दैट इज 5. सो 5 का स्क्वायर. रिमेनिंग अदर दे विल बी बेस एंड परपेंडिकुलर. तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, यहां पे कितना आ रहा है 25. दिस इज 8 एंड दिस इज 25. सो व्हाट वी हैव फाउंड दैट दिस इज नॉट इक्वल. सो व्हाट वी विल राइट, देयरफॉर दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ a right triangle. Okay, similar is third part. थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है. इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट इज 2 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट इज 2.5 सेंटीमीटर. अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस क्या लेंगे हम लोग, 1.5 2 और 2.5. 2.5 इज द लॉन्गेस्ट. तो इसका स्क्वायर जो है
अगर 1.5 स्क्वायर एंड 2 के स्क्वायर के बराबर आए देन दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। 25 का अभी हमने यहाँ पे निकाला था 6.25। 15 का निकालने के लिए वापस सेम तरीका है, 5 है तो 25, 1 नेक्स्ट नंबर इज 2, 1 2s are 2, so it will be 2.25 plus 4, 6.25, then you will add it, this will also be 6.25। डेसिमल को ऐड करने का क्या तरीका है, 4 के नीचे 4 means 4.00, 2 means 2.25। now in this way we will add, so what we found that LHS is equal to RHS। okay, so in this way these are the sides of a right angle triangle, therefore these are the sides of a right triangle। okay, now we can check for any given sides that whether they are the sides of a right triangle or not। similar is next question, that is question number 5। इसके अंदर एक डायग्राम बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। वर्ड प्रॉब्लम है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, एंड दिस इज ट्री, ये ट्री थी आपकी। नाउ दिस ट्री इज ब्रोकन, यहां से टूट गई, ठीक है, ये वाला पोर्शन टूट गया, 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से टूट गई है, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, एंड नाउ दिस टॉप, जैसे ये वाला जो पोर्शन जब मान लीजिए यहां से टूट गया, दिस विल कम डाउन। ओके, सो दिस टॉप नाउ टचेस द ग्राउंड, वेयर इट इज टचिंग, टचेस द ग्राउंड 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है, 12 मीटर, यहां पे इसको टच कर रहा है। देन फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट इज दिस, ओके, वी विल टेक दिस एज h। यहां से यहां तक को मैं क्या ले रही हूं, h। अगर ये h है, यही वाला ट्री बेंट होकर यहां पर आया है, तो ये भी क्या होगा, h। ओके, एंड द एंगल बिटवीन ट्री एंड ग्राउंड इज 90 डिग्री। सो व्हाट यू विल राइट, that by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। now this is 90 degree, so this will be hypotenuse। 5 आप बेस हम यहाँ पे 12 ले लेंगे, 12 स्क्वायर, हाइट इज 5 स्क्वायर, that is 144 plus 25, so h square is equal to 169। like I have told you to remember the squares till 25। अगर आपको 25 तक का स्क्वायर याद होगा, then you will come to know कि 13 का स्क्वायर 169 होता है। so h is equal to 13 meter। okay, so this is h। तो now total, what is the total height of tree, therefore total height of tree is equal to, this is 5 and this is 13, 5 plus 13 which is 18 meter। so see, whenever there is word problem you have to imagine it that how the diagram will be formed। once you have made the correct diagram, then only we can get the correct solution। in this way we can apply Pythagoras theorem on some of our word problems also। now we will do the next questions of the exercise। okay, now we will move to the next question, that is question number 6। in question number 6, angles Q and R of a triangle PQR। एक आपको डायग्राम दिया हुआ है like this is P, this is Q and this is R। in this PQR, this is 25 degree and this one is 65 degree। okay, and now the question is write which of the following is true। कौन सा true होगा। okay, before saying it which one is true, like we know that right now we are doing the exercise related to Pythagoras theorem, and whatever 3 options are given, let me write those 3 options, like PQ square plus QR square is equal to RP square, this is first option। second option is PQ square plus RP square is equal to QR square। then third option, RP square plus QR square
is equal to PQ square. Okay. By looking at the square, we came to know that definitely we have to check Pythagoras theorem. And for checking Pythagoras theorem, we should have one 90 degree. But here in this diagram, I don't have any 90 degree. So what we see that angle Q is 25 degree and angle R is 65 degree. So what will be the total? Angle Q plus angle R is equal to 25 degree plus 65 degree. Okay, let's add angle P also. All these three angles should be equal to 180 degree. Why? Reason is angle sum property of triangle. इस रीजन की वजह से तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180. सो P we have to find. Q is 25, R is 65 is equal to 180 degree. So angle P plus 90 degree. This add, when you will add it, you will get 90. Angle P is equal to 180 degree minus 90 degree. So angle P is equal to 90 degree. Okay. Now if angle P is 90 degree, then this opposite side is hypotenuse, जो कि एक साइड में आना चाहिए. मतलब QR का स्क्वायर एक साइड में आना चाहिए, which is only in second option. So which one is correct? This second one is correct. QR square एक तरफ आएगा, remaining can be base and perpendicular. Okay. Similarly, we will discuss question number 7. 7th question में क्या है आपका? Just look at it careful. This is very important one. Find the perimeter of a rectangle. एक rectangle के बारे में बात हो रही है. Okay, this is the rectangle. इसका आपको क्या निकालना है? Perimeter. What is the formula for perimeter of rectangle? 2 into length plus breadth. Okay, this is length and this is breadth. So find the perimeter of a rectangle whose length is equal to 40 centimeter and diagonal. Breadth is not given to us. We have been given a diagonal. Diagonal is 41 centimeter. Okay. So let's name our rectangle as A, B, C and D. अब इसके अंदर पेरीमीटर निकालने से पहले हमें क्या चाहिए होगा? Breadth. How breadth will come? Like we will use the property of rectangle that each angle of rectangle is 90 degree. So we will write. We know that each angle of rectangle is 90 degree. Okay. अब अगर यहाँ 90 डिग्री है तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर जहां पे डायगोनल और लेंथ मालूम है, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल BCD, right triangle BCD by Pythagoras theorem. Wherever I am writing PT, you will write complete word Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. ये फॉर्मूला तो आपको लिखना ही लिखना है. Okay. Now which one is hypotenuse? This is 90 degree, the opposite side. So BD square is equal to base, we will take which is horizontal, CD square plus BC square. Okay. So BD की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 41 का स्क्वायर. CD कितना है हमारे पास? 40 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके. सो 41 का जब आप स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 1681. करके देख लीजिएगा. 40 का स्क्वायर कितना होगा? 1600 प्लस BC स्क्वायर. ओके. सो 1681 minus 1600 is equal to BC square. So what we get that BC square is equal to 81, which means BC is equal to, अगर स्क्वायर 81 है तो BC मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 which is will be equal to 9 सेंटीमीटर. ओके. क्योंकि 9 9 से कितना होता है? 81. So now the breadth is 9 centimeter. Okay. Now we will use the formula of perimeter. Therefore, perimeter of rectangle ABCD is equal to 2 into length plus breadth.
2 into length is 40 and breadth is 9. So 2 into 49, which is equal to 98 centimeter. So this will be a final answer. Two things we have used in this. First one, property of rectangle, that each angle of rectangle is 90 degree. And second thing, we have applied Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, first we have found the breadth. Because we know to find the perimeter, I need both length and breadth. Only length was given, breadth was not given. In that place, diagonal was given. So I have used this diagonal to find the breadth of rectangle. Similar is our question number 8. Question number 8 bhi aisa hi hai. Okay, now look at question number 8. In question number 8, it is given that the diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Let us first draw the rhombus. Okay, we can take this as rhombus, in which rhombus के हमें दो properties में use करनी है. One is that all sides of rhombus are equal, and second one, if diagonals are given, जैसे ये वाला diagonal, this is given and this one is also given. So the longest diagonal I will take as 30 centimeter and the shortest diagonal I will take as 16 centimeter. Okay, this is 16 and this one is 30 centimeter. So two properties we are using. We know that diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other. Now what is the meaning of perpendicular bisector? In class 6th you have studied. Perpendicular means 90 degree and bisector means two equal parts. मतलब ये जो डायगोनल है ये इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, और जो ये डायगोनल है वो इस वर्टिकल वाले को भी इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है. ओके, सो लेट्स नेम इट एज O. सेंटर पॉइंट एज O, A, B, C and D. Okay, now if BD is 30 centimeter, then by this property OB will be 15 and OD will also be 15. Similarly, if AC is 16 centimeter, then by this property OC will be 8 and OA will also be 8. Half हो जाएगा. Okay, and also all sides of rhombus are equal. ये भी आपको मेंशन करना है. Okay, these are the two properties which I am using, number 1 and number 2. Okay, so now you can see here it is 90 degree. मैंने perpendicular भी बना दिया और ये दोनों bisector भी है diagonals, तभी half हो गए. So what we will take in right triangle, therefore in right triangle BOC by Pythagoras theorem, BOC में मैं लगा रही हूँ. What will happen? Hypotenuse is square. First write down the formula. This is the formula. Now if this is 90 degree, then this will be hypotenuse. BC square. Base I will take as OC and perpendicular as OB. Okay. It's very important to mention that triangle in which you are applying this Pythagoras theorem. Now BC we don't know. OC हमें पता है कितना है 8 and OB is 15. आपको ये प्रॉपर्टी लिख देनी है और बाकी सारी चीजें आपको डायग्राम में शो कर देना है. So BC square is equal to 64 plus 2 to 5. BC square is equal to 289. And I know that 17 17s are 289 होता है. So BC is equal to square root of 289. So BC is equal to 17 centimeter. So this is one side of rhombus. And what we have to find out? We have to find out the perimeter of rhombus. So therefore, perimeter of rhombus will be equal to 4 into side. That is 4 into BC we can say. 4 into 17, that is 68 centimeter. This will be your answer. Okay,
So now I hope that you have understood that how, like this was not a direct question of Pythagoras theorem. In this, if you people don't know the property of rhombus, you will not be able to apply this Pythagoras theorem. So this was one of the indirect question and it can come for long marks in your exam also. So now I hope that you have understood various applications of Pythagoras theorem in word problem also, in direct questions also, and in indirect questions also. Now in this way our exercise 6.5 is complete and our chapter also, the triangle and its properties, is complete. So the next topic we will discuss in our next class. Thank you everyone.